तो बच्चों अभी हम लोग बात कर लेते हैं सेक्शन डी की। द फॉलोइंग क्वेश्चंस आर केस बेस्ड क्वेश्चन। रीड द केस केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोज। 29. The oxidation number of the central atom in a complex is defined as the charge it would carry if all the ligands are removed along with the electron pair that are shared with the central atom. Similarly, the charge on the complex is the sum of the charges of the constituent part, that is, the sum of the charges on the central metal ion and its surrounding ligands. Based on this, the complex is called the neutral if the sum of the charges of the constituent is equal to 0. However, for the anion and cation complex, the sum of the charges of the constituent is equal to the charge on the coordination sphere. तो इसका कोई मतलब नहीं है, इससे डायरेक्टली डेफिनेशन है ऑक्सीडेशन नंबर का. बट बेस्ड ऑन द अबव इंफॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. So first question is define ambidentate ligand with an example. So what is the meaning of ambidentate ligand? Actually it is monodentate ligand, but coordinate bond can be formed by the two atoms like cyanide and NC. So bond can be formed by carbon and nitrogen and carbon, both side, SCN and NSC. So like that it can form by more than one atom are there in the monodentate ligand which can form the bond. क्वेश्चन नंबर बी की बात करते हैं. व्हाट टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म इज शोन बाय CONH3(5)Cl(SO4) एंड CONH3(5)SO4Cl. सो व्हाट टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म इज देयर? सो क्लियर कट केस है ये आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म का, बिकॉज व्हेन वी आर डिसोसिएटिंग दिस वन SO4 ion and this ion, Cl ion and this ion, so different type of ions are obtained on the dissociation. It means this is what? Ionization isomers. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सी की बात करते हैं. डिफाइन चिलेटिंग इफेक्ट. हाउ इट्स इफेक्ट द स्टेबिलिटी ऑफ द कॉम्प्लेक्स. स्पष्ट बात बता दें कि अगर चिलेटिंग ग्रुप प्रेजेंट होता है किसी सेंट्रल एटम पे तो उसको स्टेबिलिटी देता है विथ रिस्पेक्ट टू मोनोडेंटेट लिगेंड. तो चिलेटिंग इफेक्ट इंक्रीजेज द स्टेबिलिटी ऑफ द कॉम्प्लेक्स फॉर्म्ड बाई मल्टीडेंटेट लिगेंड. मल्टीडेंटेट लिगेंड ही व्हाट चिलेटिंग एजेंट है. So with comparison with the monodentate ligand, it forms the stable complex. Now next point, C question. Find the coordination number and oxidation state of the chromium in Na2Cr(C2O4) whole thrice. So coordination number तो ये हो गया -2, 3 2 जा 6. So 6 कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया क्योंकि ये बाइडेंटेट लिगेंड है. और अगर ऑक्सीडेशन नंबर की बात की जाए क्रोमियम की तो 3 × +1 plus this one for chromium X, 3 × -2 is 0. So we will get X is equal to +3. तो इस तरह से हम लोग इसका ऑक्सीडेशन नंबर +3 फाइंड आउट कर सकते हैं. अब बात कर लेते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 30 की. सर्टेन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर रिक्वायर्ड इन ए स्मॉल अमाउंट इन आवर डाइट बट देयर डिफिशियंसी कॉजेज स्पेसिफिक डिजीज. दीज कंपाउंड्स आर कॉल्ड विटामिन्स. मोस्ट ऑफ द विटामिन्स कैन नॉट बी सिंथेसाइज्ड इन आवर बॉडी, but plant can synthesize almost all of them, so they are considered as essential food factors. However, the bacteria of the gut can produce some of the vitamins required by us. All the vitamins are generally available in our diet. The term vitamins was coined from the word vital plus amine. Since the earlier defined compounds had amino group, vitamins are classified into two groups depending upon their solubility in the water or fat, namely fat soluble vitamins and water soluble vitamins. So it is about vitamins only. So now first question is, what is the other name of vitamin B6? तो विटामिन B6 का दूसरा नाम है pyridoxine. Name the vitamin whose deficiency cause increased blood clotting time. So विटामिन K रिस्पॉन्सिबल है ब्लड क्लॉटिंग टाइम को बढ़ाने के लिए. जेरोप्थेल्मिया इज कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ विच विटामिन? गिव द टू सोर्स ऑफ द विटामिन. सो जेरोप्थेल्मिया कॉज्ड बाय विटामिन ए. इसके सोर्स हैं कैरट, स्वीट पोटैटो, इसमें विटामिन ए पाया जाता है. और की बात कर ले. वाई कांट विटामिन सी बी स्टोर इन आवर बॉडी? नेम द डिजीज कॉज्ड बाय द deficiency of this vitamin. So vitamin C cannot be stored in our body. Reason? Vitamin C is water soluble, or what happens if it will dissolve in the water, when you will be urinate, it will be come with the urine. So
जो भी हम लोग विटामिन सी है वो यूरिन के साथ बाहर आ जाएगा, और इसका डिफिशियंसी डिजीज है स्कर्वी। क्वेश्चन बात करेंगे हम लोग सेक्शन सी की, और इसमें क्वेश्चन नंबर 31 है, अटेम्प्ट एनी 5 ऑफ द फॉलोइंग। क्वेश्चन फर्स्ट है, सीरियम थर्ड इज इजिली ऑक्सीडाइज टू सीरियम फोर्थ, कमेंट। सो सीरियम थर्ड इज स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, xenon 4f1, while cerium 4 has the even more stable, it is noble gas configuration like xenon, so cerium third easily oxidized to cerium 4. B क्वेश्चन, रिडक्शन पोटेंशियल दे रखा है इधर Mn का, और इसका स्टैंडर्ड EMF वैल्यू है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है इसका -1.18 वोल्ट। Why is this value highly negative compared to the neighboring D block element? इसका रीजन ये है कि ड्यू टू एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी ऑफ द हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स ऑफ Mn2+, सो ये Mn2+ स्टेट में इसका ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल है ड्यू टू द हाफ फील्ड, इसलिए वो इसमें इजीली जाना चाहता है। क्वेश्चन नंबर सी है, विच एलिमेंट ऑफ D3D सीरीज हैज़ लोवेस्ट एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन एंड वाई। सो सबसे कम लोएस्ट एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन जिंक का होता है, और रीजन उसका ये है कि इसके पास अनपेयर इलेक्ट्रॉन कम है ही नहीं, सो एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। क्वेश्चन नंबर डी है, व्हाट हैपेंस व्हेन सोडियम क्रोमेट इज एसिडिफाइड। जब सोडियम क्रोमेट को एसिडिफाइड करते हैं तो ये Na2Cr2O7 में चेंज करता है। पहले इसका कलर येलो होता है और एसिडिफिकेशन के बाद ये ऑरेंज कलर का हो जाता है। क्वेश्चन नंबर ई, जेडन, कैडमियम और मरकरी आर सॉफ्ट मेटल, वाई। सॉफ्ट होने का रीजन वही है जो क्वेश्चन नंबर सी में हम लोगों ने बात की, बिकॉज दे हैव नो अनपेयर इलेक्ट्रॉन, हैव वीक मेटालिक बॉन्ड, दैट्स वाई दे आर द सॉफ्ट। क्वेश्चन नंबर एफ है, वाई इज पर मैग्नेट titration not carried out in the presence of HCl. So because permanganate ion can be oxidized the chloride ion into the chlorine. What happens, जब हम लोग KMnO4 का रिएक्शन HCl के साथ कराते हैं तो ये सीधे HCl माइनस को Cl2 गैस में चेंज कर देता है, ऑक्सीडाइज कर देता है। लेकिन यही बात जब हम लोग H2SO4 के साथ करते हैं तो नहीं होता है, इसलिए हम लोग HCl यहाँ पे यूज नहीं करते हैं। जी क्वेश्चन की बात करें, द लोअर ऑक्साइड्स ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स आर बेसिक वेयर एज हाइस्ट आर एम्फोटेरिक और एसिडिक, गिव रीजन। सो रीजन इसका है बिकॉज एसिडिक कैरेक्टर ऑफ द ऑक्साइड इंक्रीजेज विद द इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द सेंट्रल मेटल। होता क्या है कि जब हम लोग बड़े ऑक्साइड की बात करते हैं तो उसमें सेंट्रल एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ जाता है, जिसकी वजह से या तो वो एम्फोटेरिक नहीं तो एसिडिक हो जाता है। 32 नंबर क्वेश्चन है, इसमें ए पार्ट का फर्स्ट क्वेश्चन है, ईशान ऑटोमोबाइल रेडिएटर्स इज फिल्ड विद द 1 kg ऑफ वाटर, हाउ मेनी ग्राम ऑफ इथिलीन ग्लाइकॉल, जिसका मोलर मास 62 है, मस्ट ईशान ऐड टू गेट फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सोल्यूशन लोअर टू 2.8 डिग्री सेल्सियस, के फॉर वाटर इज 1.86 केल्विन kg पर मोल। क्या करते हैं हम लोग, रेडिएटर में, ठंडे प्रदेश में रेडिएटर के अंदर आइस न बने उसके लिए हम लोग इथिलीन ग्लाइकॉल डालते हैं। तो ये करेक्ट कितना डाला जाए, तो हम लोगों के पास एक फॉर्मूला है, del TF इक्वल टू 0 डिग्री सेल्सियस माइनस दिस टेम्परेचर माइनस 2.8 डिग्री सेल्सियस, वी आर गेटिंग 2.8। नाउ मोलर यहाँ पे del TF इक्वल टू होता है I इंटू KF इंटू M, तो यहाँ से हम लोग मोलालिटी निकाल सकते हैं। मोलालिटी का इसमें आ रहा है हम लोगों का 1.505 मोलर। मॉलिक्यूलर मास ऑफ इथिलीन ग्लाइकॉल 62 होता है, और जब हम लोग मॉलिक्यूलर गिवन वेट कैलकुलेट करना होता है तो गिवन वेट को नंबर ऑफ मोल इंटू मॉलिक्यूलर मास से मल्टीप्लाई करने से हम लोगों को आ रहा है 93.31 ग्राम। तो इतना हम लोगों को डालना पड़ेगा जिससे कि उसमें आइस ना बने। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट टाइप ऑफ डेविएशन फ्रॉम द राउल्ट्स लॉ इज शोन बाय द इथेनॉल एंड एसीटोन मिक्सचर, गिव द रीजन। सो व्हाट हैपन्स, जब हम लोग इस इथेनॉल को और एसीटोन को साथ में मिलाते हैं तो मान लो कि इसको इथेनॉल को हम लोगों ने ए कहा, एसीटोन को बी कहा। सो हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं बिकॉज हेयर ए बी इंट्रैक्शन आर वीकर, इसके बीच का इंट्रैक्शन कम है,
than AA and BB interaction. Due to this, vapor pressure increases, which results in the positive deviation. इसके वजह से इसमें positive deviation होता है. नेक्स्ट न्यूमेरिकल क्वेश्चन की बात करते हैं और में दिया है बी पॉइंट. बी का फर्स्ट, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 750 mmHg, प्रेशर इज 99.68 डिग्री सेल्सियस. हाउ मच सुक्रोज, द मोलिकुलर मास इज 342 ग्राम पर मोल, is to be added to 500 gram of the water such that it boils at 100 degree Celsius. Kb for water is 0.52 Kelvin kg पर मोल. तो क्या करना है हम लोग को, जस्ट पहले के जैसा करना है हम लोग को, डेल टी बी निकाल लेना है. डेल टी बी, टी फाइनल माइनस टी इनिशियल, ए आ रहा है हम लोग का 0.32. फिर मोलालिटी निकाल लेंगे डेल टी बी बाई के बी से. मोलालिटी हम लोग का आ रहा है 0.6154 मोल पर के जी. बट हम लोग को पता करना है 0.5 kg में कितना है. मीन्स ये तो 1 kg की बात हो गई ना, पर kg लिखा हुआ है. हम लोग को तो 0.5 kg की बात करनी है. तो ये इसका आधा कर दें तो ये हो जाएगा 0.3077 पर मोल. सो once again given weight n into molecular weight, so we are getting this one 105.2 gram. Question number 2 is state handy law and write its any one application. So definition, the partial pressure of gas in the vapor phase is directly proportional to the mole fraction of the gas in the solution. किसी भी सॉल्यूशन में जब हम लोग किसी गैस को डिजॉल्व करने जाते हैं तो क्या करना होता है, उस गैस के ऊपर प्रेशर बढ़ाना होता है. जितना प्रेशर बढ़ाएंगे उतना ज़्यादा गैस उस सॉल्यूशन में डिजॉल्व करेगा. जैसे कि हम लोग जब कोई भी कार्बोनेटेड बीवरेज बनाते हैं, जैसे CO2 को हम लोग क्या करते हैं कोल्ड ड्रिंक्स के अंदर डिजॉल्व करते हैं, तो वो डिपेंड करता है कि कितना प्रेशर हम लोगों ने CO2 के ऊपर डाला है, तो जा करके उसमें डिजॉल्व होता है. क्वेश्चन नंबर 33 ए पार्ट, व्हाट इज सेइंग, द कंपाउंड ए with the molecular formula C9H10O forms 2,4-DNP derivatives, reduce failing solution and undergoes Cannizzaro reaction. On vigorous oxidation, it gives 1,2-benzene dicarboxylic acid. So, first question, identify A and write the IUPAC name. So, how can we write this one? So, see C9H10O is 2-ethyl benzaldehyde. A is this one. This is the structure. Now, why this is the structure? By question number 2, write the reaction of compound A with first 2,4-diphenyl hydrogen. So, this is the molecule and we are reacting with this one 2,4-dinitrophenyl hydrogen. So, we are reacting this one. This yellow orange color is obtained. So, this is called hydrogen, dinitro-hydrogen. So when we are reacting this one, we are getting yellow color, yellow orange color, this compound we are getting. Now question number 2, failing solution. When we are reacting with the failing solution, this compound react with the 2Cu2 plus. So initially it is blue color in the basic medium, changes to what, Cu2O in red color and 2H2O evolve. Question number 3, write the equation of compound A when it undergoes Cannizzaro reaction. So this contains aldehyde group and in presence of NaOH, one part goes to the salt form, another part goes to the alcohol form. This is called what? Cannizzaro reaction. Account for the following. First question, the alpha hydrogen of the aldehyde and ketones are acidic in nature. Why? Because resulting carb anion or called enolate ion after loss of alpha H atom stabilized by resonance. So sometimes what we are saying, acidic strength, about acidic strength, if their conjugate base is stable, it means acid is a strong acid. So here also the enolate ion formed is get stabilized. This is the reason. Oxidation of aldehydes is easier than ketone. Why? Because they have a H atom directly attached to the carbonyl carbon atom, which is absent in the ketone. So this hydrogen is not present in the ketone, but it is present in the aldehyde. So due to this, oxidation of aldehyde is easier. Next, second question, arrange the following in. First, decreasing reactivity towards the nucleophilic addition reaction, propanol
acetone and benzaldehyde. So propanol is greater than acetone is greater than benzaldehyde. Aldehyde is more reactive than ketone due to the steric electronic effect. Less steric hindrance and weak electron donating in the inductive effect from the alkyl group, benzaldehyde reactivity decreases due to electron withdrawing phenyl group and increase steric hindrance compared to the propanol. So it follows this order. Question number 2. Increasing order of the boiling point: propane, ethanol, dimethyl ether and propanol. So among this, how can we explain the boiling point? So in propane, only van der Waals force is present, so it is less. But in dimethyl ether, dipole-dipole interaction is present. It is less than propanol, and it has a strong dipole-dipole interaction. Okay, and it is also less than ethanol. Ethanol is strong, having high boiling point due to a strong H bonding. So it's based on the interaction between the molecule. So this is the weakest force of attraction, and this is the strongest force of attraction, due to which its boiling point is highest, this boiling point is lowest. Third question: give simple chemical test to distinguish between the benzoic acid and benzaldehyde. So this is the benzoic acid, react with the sodium bicarbonate, and this is the benzaldehyde, react with the sodium bicarbonate. What happens here? It forms salt and gives CO2, that is called brisk effervescence. But this reaction doesn't take place with the aldehyde. So this is the difference. So these are the questions of 2024 SIT 1 chemistry. Thank you.